Good morning students, welcome back to the computer class beta. In the previous lecture we have already done how we can insert the table in a plain document, how we can make it attractive and how we can add the rows and column. Beta, now in today's lecture we are going to discuss how we can add the cells, how we can merge the cells, how we can split the cells and how we can resize our table and how it will be done. So today we are going to do these things with the help of practical. So let's start our practical. You have to just first start your MS Word. MS Word. In the previous class we have already discussed how we can insert the table. So now today we are going to do how we can merge the cells, how we can split the cells and how we can move or resize our table. So first of all you have to insert your table. Click on insert tab, insert icon, click on insert table, select the number of rows and columns. For example, I want to select 8 columns and 4 rows. Now click on OK. See your table, this one is your table. Okay, now how we can merge the cells? You have to select the number of cells which you want to merge, जिसे आप merge करना चाहते हो. For example, मैंने इन तीनों को select किया है. Now click on layout tab after selecting the cells and click on merge. See, this one is your merge cell icon. You have to click on that icon and see आपकी सारी की सारी cells क्या हो गई, merge हो गई. इन तीनों cells की एक cell बन गई. You have to write it anything. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. For example, computer. See, ठीक है, this one is your particular single cell. Now our second topic is how we can split the cell. To split the cells, first of all you have to select any one cell. Like I want to select this cell or this one. Split का मतलब उन्हें 2 parts में divide करना. After selecting them, again click on layout tab. In your layout tab, see split cell icon is given, which is used to which is used to divide the cells in the further fields. You have to click on that. Now select आप उस particular cells को कितने number of column और rows में divide करना चाहते हो. For example, I want to divide it in a 8 and 2. Now click on OK. See, आपने जो 2 cells को select किया था split करने के लिए, वो दोनों cells कितने parts में divide हो गई हैं, कितने parts में split हो गई हैं? 8 columns and 2 rows. See, this one is your split part. जो आपने number of 2 cells को आपने split किया था, means 2 parts में divide किया था. Okay. And now how we can split the table? So you have to click on that. Now click on split table icon. See, आपका जो table है वो 2 parts में divide हो जाएगा. If I want to split that table again, you have to select that table, click on split table again और उसमें जितने number of rows and columns है वो उनको half divide कर देगा. अगर 2 rows and 2 columns हैं तो वो single row और single column में उसको divide कर देगा. Now in last, how we can resize our table? See, this one is your table. Okay, you have to click on it. This one is what? इससे आप क्या कर सकते हो, टेबल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं जहाँ भी अपने पोजीशन को मूव कर रही हूँ मेरा टेबल मूव कर रहा है पूरा. सी, है ना? यू हैव टू सेलेक्ट दिस एंड चेंज द पोजीशन. एंड इन द राइट साइड लास्ट में आप नीचे कॉर्नर में देखो दिस वन. ये क्या है? इससे आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को रीसाइज कर सकते हो. आप उन सेल्स को बड़ा भी कर सकते हो, आप उन सेल्स को स्मॉल भी कर सकते हो. सी, लाइक दिस. ओके, so it is clear how we can merge the cell, how we can split the cells and how we can resize or move our table. To move the table you have to click on that position. इससे आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को मूव कर सकते हो. एंड टू रीसाइज द टेबल यू हैव टू क्लिक ऑन दैट स्क्वायर. जो आपका स्क्वायर आइकन बना है आप इसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे और इसे मूव करोगे लार्जर और स्मॉलर बनाने के लिए. सो दिस वन इज क्लियर to all how we can create it. Okay, today's topic is over, so I want you all have to practice them first at your home, and in Zoom class if you are facing any problem we are going to solve it. Thank you.